Good afternoon, friends. Let's begin our conversation. Welcome to this press conference. Before that, sorry, before I open the floor, I have an announcement to make. So let me first make the announcement. This is about the visit of the Prime Minister of Mauritius to India. The Prime Minister of Mauritius, His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, will undertake a state visit to India from 9 to 16th of September 2025. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Dr. Ramgoolam to India in his present term. You would recall that Prime Minister Ramgoolam had earlier visited India in 2014 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During this visit to India of Dr. Ramgoolam, he will, apart from Delhi, he'll also visit Mumbai, Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he'll be attending a business event. मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब। तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देखता है उस रणनीतिक साझेदारी में, तब जबकि हमारी फोर्सेस उनके साथ जॉइंट युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के साथ चल रही हैं। इस संबंध को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास हैं? पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. As far as United States relations are concerned, प्रणय, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हैं हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं, दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ, और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। Sorry. We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership, which is anchored in our shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. As you would have seen, प्रणय, आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा, युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में, साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था, एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। A lot of countries are reaching out to India to intervene to end the conflict in Ukraine. Is there something that India is going to do, considering the fact that we are close to Russia as well? As far as the Ukraine conflict is concerned, we welcome all the recent efforts towards establishing peace in Ukraine. We hope that all parties will proceed ahead constructively. India supports an early end of the conflict and the establishment of an enduring peace. यूक्रेन के मुद्दे पर आपने देखा होगा कई एक सारी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और दुनिया के अलग अलग लीडरों के साथ। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, और जहाँ तक यूक्रेन के हमारा पोजीशन का सवाल है, ये हमने आपको बताया है कि जो भी अभी के एफर्ट्स चल रहे हैं जो वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और हमारा ये मानना है कि जो भी पार्टीज़ हैं उसमें इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ,
और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत इस बात को सपोर्ट करता है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष चल रहा है, वो ख़त्म हो और वहाँ पर एक चिरस्थायी शांति का वातावरण बने। अजय, My second question is External Affairs Minister Jaishankar spoke at the press conference along with the German Foreign Minister and said he had raised the issue of Ariha Shah's linguistic, cultural, religious rights. It's been 3 years since he said he had spoken to the previous German Foreign Minister about it. We understand that there is still no teacher for the language, for any Indian language for Ariha Shah. It's 3 years later. Has India failed to express or to have the German government completely understand its concerns on the issue? And what kind of action can India take given that it's been 3 years? on the Ariha Shah case, yes, this was raised when the External Affairs Minister was here. The Foreign Minister of Germany was here. As it was also raised when taken up when External Affairs Minister visited Germany. We have had progress in this matter. We will shortly give you more details on that. But to tell you that the government attaches high importance to this particular matter. We have had consular visits. We have the embassy has been engaged with her, provided her books. We have arranged temple visits, and we are doing several other things to ensure that her upbringing happens in a cultural environment that is conducive to her and for her full growth and development. So on some of the things where progress has been made, I will surely inform you on that account. सर, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए बाढ़ से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। मेरा सवाल यह है कि सिंधु जल समझौता स्थगित है, ऐसे में उच्चायोग के जरिए जानकारी देने का मकसद क्या है, कारण क्या है? नीरज, ये जो हम लोग बाढ़ संबंधित जो डेटा हम पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। तभी मैंने कहा कि ये हाई कमीशन के माध्यम से उनको दिया जा रहा है और ये मानवता के आधार पर दिया जा रहा है। We have been sharing high flood data with Pakistan through our High Commission, through our diplomatic channels. This is being done as and when required. First, you've seen the kind of rainfall that is happening in that part of India and that part of the world. And this is being done based on humanitarian consideration. So, Shruti Ranjan sir, if you could give us we have seen a lot of comments on the H-1B visa coming from the United States, some even calling it a scam that Indian companies have been running. Is there a response or a statement that you would want to give, sir? On H-1B visa, look, so the mobility partnership between India and the United States is an important pillar of this relationship. It supports our technology collaboration, it supports our economic collaboration, it supports several other things that are happening in the space of innovation, new emerging technologies, financial collaboration. We value it, and it is something that brings mutual benefit to both sides. While it creates space for our skilled people to work in the United States, it also adds a lot of value to the competitiveness and productivity of American enterprises. It is something that is in mutual benefit. We continue to engage with the United States on mobility issues and see how best we can drive this partnership.